किसे नहीं जाएगा. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl Avneet and finally मैं अपने रूम टूर का वीडियो बना रही हूँ. रूम टूर 2022 एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगी बिकॉज मेरा रूम चेंज होता रहता है बहुत. द नेक्स्ट वीडियो इज़ गोइंग टू बी समथिंग जहाँ पे मैं अपना रूम पूरा चेंज कर रही हूँ, तो वो वाला वीडियो भी मैं बनाने वाली हूँ. बट फॉर नाउ फाइनली आप लोगों को ये वीडियो चाहिए था कब से. So let's not waste any time and let's begin. This is my room. This is my comfiest room ever. मतलब मैं कितना भी ट्रैवल करूँ कहीं पे भी I always get homesick because ऐसा रूम किसको नहीं पसंद. आप मेरे कोई भी फ्रेंड को जाके पूछ लो, वो सब लोग आपको यही बोलेंगे कि अवनीत के बेड पे आके हमें बस नींद आ जाती है. इतना कम्फी और इतना कोजी बेड है ये मेरा. सो दिस इज़ माई बेड, लवली बेड जिस पे लेट के मैं सो जाती हूँ बहुत जल्दी. थैंक्स बिकॉज एवरीबडी डिजर्व्स अ गुड नाइट स्लीप. So this is my desk, you can say. It's like a stationery cum desk. So I have my candles over here. Bath and Body Works, always love. My mom got this for me. This is such a cute table lamp, feathery, just like me, just like totally me. This is my Get Shit Done book, and this is my iPad, this is my speaker, my journal, my stationery. This is something that I never use, but it's just kept just to look pretty. Coming here is my collage that I've made, all my special people, everybody that I love, my friends, my mama, bhai, my family, all of them on this. So I think मैंने ये post किया था. I remember you guys saying कि क्या है on Friendship Day, and this is something that I have made and I personally love because this is my life. And these are my babies that I just adopted. These are my plants. इसके पीछे actually एक back story है. मेरी मम्मी ने बोला कि तू अपना ध्यान नहीं रखती है और तू समटाइम्स आई बिकम रियली इर्रिस्पॉन्सिबल. तो मम्मा ने बोला कि ये तेरे जाने हैं जिनको तू हमेशा पानी देगी और इनका ध्यान रखेगी और देखेगी इनको क्या ज़रूरत है, सो दैट तू रिस्पॉन्सिबल भी होगी एंड यू नो देयर इज़ अ लिविंग थिंग देयर अराउंड यू. सो द वाइब्स ऑल्सो, बिकॉज पीपल से दैट प्लांट्स होने चाहिए आजू बाजू, लाइवली हो जाता है, वाइब्स अच्छी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती हैं. एंड आई हैव एक्चुअली फेल्ट इट. आई टेक केयर ऑफ देम एंड आई थिंक लाइक आई हैव बिकम लिटिल बिट more responsible in my life. So thank you guys, I love you guys. This is my books. I don't know, it's like a thing that I've just kept for my books. But guys, let me tell you one thing. ये ना मतलब half of the books भी नहीं है जो मेरे पास हैं. मतलब ये बहुत कम books हैं. And I'm a bookaholic completely and I love books. So this I've kept. Then these cute छोटू से these cute bean bags that don't look like a bean bag but is a bean bag. You can sit, but it's just kept for show off purposes only. Thanks. And this is like a cute little city, very aesthetic tumbler my mother has made. All credit goes to Sonia ma'am. She is the artist of this situation happening. बहुत सुंदर है. So I love dream catchers by the way. मेरे रूम में आपको मोस्टली सब ड्रीम कैचर्स ही दिखेंगे. Here is a really cute dream catcher that I really love. It's the turquoise dream catcher. Again another dream catcher. तो मुझे ड्रीम कैचर का शौक पड़ा एक मूवी देख के जिसका नाम है ट्वाइलाइट. उसमें बेला है, बेला मैडम को जेकब सर देते हैं एक ड्रीम कैचर जिससे उनके सारे नेगेटिव ड्रीम्स दूर हो जाते हैं. तो तब से मेरे दिमाग में आ गया था कि अभी मुझे बुरे सपने आएंगे ही नहीं अगर मेरे पास ड्रीम कैचर हो. तो मेरे पूरे रूम में ड्रीम कैचर लगने, बुरे सपने चाहिए ही नहीं. And this also, I've got these 3 cute little dream catchers, all pastels because I love pastels. I'm a sucker for pastel colors, you guys know. Life is good and I mean it, and you can see it here. And this is like a small section that I decorated. I decorated personally. This is my idea. Again, cannot forget books, plants. Obviously these are fake but they're there.
just to look good. एक यहाँ पे भी मैं फ़ोटो खींचा करूँगी, अब मेरे को समझ में आ गई, मेरा बैकग्राउंड मैंने अच्छे से यूज़ नहीं किया अभी तक इंस्टाग्राम पे. अगेन यहाँ पे थोड़े से बुक्स, like corner that I have. Again books and still अभी भी आधी और बुक्स हैं जो बाहर पड़ी हैं, वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी because ये सिर्फ एक रूम टूर है. This is not my house tour. Now coming to my bag collection. This is my bag collection. These are all the bags that I love. There are more, but वो इतने मुझे नहीं पसंद तो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी. But these are the bags that I really love. So love you guys. This is my shoe collection. So as you guys know, recently I've been too much into these babies, my babies, Jordans, and ये थोड़ा सा मेरा इधर भी है, यहाँ पे भी है, थोड़ा यहाँ पे भी है, collection, Jordan collection है. And obviously like the shoes that I wear, the heels that I wear. इस पे भी मैं एक वीडियो करूँगी तो मैं आपको भी इतना नहीं दिखाऊंगी, ये वाला कंटेंट नहीं अभी मैं पेस्ट करूँगी यहाँ पे. Now going to my closet. Again, hello dream catcher. बहुत अच्छे सपने आते हैं, आपको पता नहीं मुझे बहुत. ये मेरा क्लोजेट है. Yeah, this is the walk-in closet that I always dreamed of. Thank you बाबा जी कि मेरे को इतना अच्छा क्लोजेट मिला. Like I'm sure that people have better ones, but I just always wanted a walk-in closet in my life where I can just walk in and today I'm gonna wear this, today I'm gonna wear that, just like choose आज मैं क्या पहनने वाली हूँ वॉक करते करते. क्योंकि मुंबई में प्रॉब्लम यही है, फ्लैट इतने छोटे होते हैं ना, वॉक ही नहीं हो पाती. तो वो वॉक करते करते जो एक मज़ा है ना ड्रेस चूज़ करने का, मुझे इस क्लोजेट में मिलता है. अगेन यहाँ पे आई हैव लाइक अ लिटिल बिट ऑफ माई बैग्स हियर. वॉक इन क्लोजेट पे भी मैं वीडियो बनाना चाहूँगी तो अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी. ये है some mood board that I created once because I was really into yellow tones on Pinterest and I just like put all these like aesthetically, मतलब इतना ज़्यादा वो करके नहीं. कृपा और मैंने ये किया था साथ में, I remember. I love you कृपा. and कृपा और मैंने एक और चीज़ की है. This is my Pinterest board coming into real life. All of the things that I loved, सारी चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद है, अगर आप बहुत बारीकी में जाओगे ना, like my fans will know. So my favorite movie, my favorite character, my favorite hero, Emily in Paris. Oh my god, I love her. Then Mean Girls. Then there is Vampire Diaries. I love these series. Gucci, my favorite brands, my favorite colors, my favorite books, my favorite. See, that's Bella right there. So yeah, I think जो चीज़ें मुझे पसंद है हम दोनों ने सिलेक्ट की थी साथ में, I remember, and we took out the printouts of them and like put it all over the whole wall. That day was just magical. I remember like setting up my own room with my best friend was just the best thing. And then there's this Instagram like that I've got here because obviously किसको Instagram likes पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है. And then there's this like a normal sitting like stool that I have जो मैं मेकअप करते टाइम यूज़ करती हूँ उसके ऊपर बैठ के. This is a little hey Google, what's the date? It's Monday, the 29th of August 2022. And by the way, if you're ever feeling curious about other ways I can help, just ask, what can you do? Okay Google. यहाँ पे मेरा perfume collection है. These are the body mists that I have from Bath and Body Works and then perfumes obviously. Coming to this section which is one of my favorite sections in my entire room. This is my dressing. ऊपर से नीचे फुल फिल्म स्टार वाला है, ये वाइब देता है मुझे. दैट्स वाई मेरे मम्मा को याद है, मैंने मम्मा को बोला था मम्मा ऐसा मत करना कि कहीं से लाइट आ रही है और ऐसे, मेरे को इसके अंदर ही लाइट चाहिए. मुझे फुल फील लेना है रेडी होते टाइम कि मैं रेडी हो रही हूँ आज, आज काम होने वाला है एंड आई एम गोइंग टू वर्क लाइक अ प्रोफेशनल एक्टर. एंड दिस इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ परफ्यूम कलेक्शन दैट आई हैव. इसमें बहुत सारे मैंने आपको परफ्यूम्स मैंने दिखा दिए आई थिंक मोस्टली बिकॉज मैंने वो वीडियो बनाया था. एंड दिस अगेन सम ऑफ द परफ्यूम्स दैट आई जस्ट बॉट. Cartier, Chopard. This is amazing by the way. Yeah, little bit of jewelry that I have. These are the face tools that I have that I use on my face. Tissues obviously because
No Ray, not like that. Some makeup, then my speaker, that's it. This is my bathroom. It's not at the best condition right now, but इसका मैंने बहुत अच्छा vibe एक बार create किया था. मैं Instagram पे बाद में upload करूँगी. This is the washroom that I have, and this is the light that I've put in my washroom because I like dark themes mostly. I don't like too bright. So yeah, that's it, and that is, I guess, all that I have. Oh, please come here. I want to show you guys the view from here. रात को और भी सुंदर लगता है ये, but अभी फिलहाल सुबह में भी मैं आपको ये दिखाना चाहूँगी. तो मेरे रूम से स्पेशली सबसे बेस्ट व्यू है इधर का, क्योंकि किसी और के रूम से ये वाला व्यू नहीं आता, इसलिए मैंने ये वाला रूम भी लिया था. चलो, लेट्स गो आउट. सो ऑब्वियसली मैं फ्लोर का नंबर नहीं बताऊंगी, बट मेरा घर बहुत ऊपर है. दैट्स व्हाई आई रियली लव द व्यू फ्रॉम हियर. मतलब आई कैन सी लाइक हाफ ऑफ द मुंबई फ्रॉम हियर. इट्स सो प्रिटी. एंड कभी कभी तो लाइक यू नो बारिश आती है जब आई हैव टू लाइक क्लोज द विंडोज़, बिकॉज बहुत ज़्यादा यू नो एकदम से लाइक बारिश और बादल आते हैं अंदर. But this is like one of the best feels I feel. Like I just stand here. Sometimes I go in my balcony and just like, you know, look at the sky, because the sky is in beautiful colors यहाँ पे. Okay, so that was it. This is my cute little room tour. अभी और मैं नहीं बताऊंगी, धीरे धीरे करके I'll show you my shoe collection, I'll show you my bag collection, my makeup collection, my jewelry collection, my clothes collection, wardrobe collection, all of it, books collection, everything. But I hope that you guys enjoyed this video. आप लोग काफ़ी टाइम से मुझे बोल रहे थे कि आपको मेरा रूम देखना है. Finally, here it is. And talking about my room, I've really set the vibe where I think 4-5 words I'll put: cozy, comfortable, aesthetic, moody, very Pinteresty, and most of all, really important, cute. So yeah.